So what we are going to do is today's class we are going to have a tensorial representation of this E and B fields. ठीक है? If you remember हम जब structure of space time किया था, we had a particular representation how we represent space time in terms of tensorial components or in terms of matrix transformations. Here हमारे पास जो lambda है, lambda was like lambda was, if you remember, x mu was represented like this. Lambda mu x. So it's a sort of matrices. These are number of rows, these are columns, and these can get contracted. Okay, this mu will get contracted mu, yes, x mu होगा. So अब ये है कि tensors are normally what? जैसे हम vectors हैं, vectors के components you can transform vector into its vector components. अब वो components कैसे transform होते हैं space में? Those are known as the components of vectors transform in space. They are known as tensor quantities. जो E fields and B fields हैं, they are not magnetic lines of electric lines of which are radial ऐसे, है ना? At every point the x component भी होगा, y component भी होगा, z component भी. Now it's not E fields only, it's E fields are steady E fields. How changing electric fields produce magnetic fields, or how magnetic fields also produce electric fields. So flux भी कैसे change होता है, lines of forces भी कैसे change होता है. So at every point the components of E fields and B fields change continuously. तो अब हमारे लिए जो vectors are not the appropriate quantities because components of the vectors are changing. उन्हीं को हम tensors कहते हैं, है ना? Tensors. So the tensorial representation is the way we can represent E fields and B fields. जिसको हम कहते हैं in terms of how we can tensorially represent electromagnetic field. So before coming to the point जो हम usually tensor of one component. So mu can go from 0 to 3, but in principle mu can go from 0, 1, 2, 3. So you cannot only have one component, you can have two components. तो उसी हिसाब से indices भी हो सकती हैं. Mu can be ये it can be mu, gamma, alpha, beta. ठीक है? अब हमको स्टडी करना है कि how we can represent electromagnetic field in terms of tensor quantity, and which is the tensor which is most appropriately or suitably describes electromagnetic field, which composes of E fields and B fields as a quantity. ठीक है? This is our task. So उसी को हम करेंगे. So it turns out that it's an antisymmetric tensor of rank 4. वो है that appropriately describes the description of E fields and B fields. So before we are going to have it, so हमारे पास the topic is the field tensor. So if you remember the same, for example, a vector will transform like this. If you remember, in terms of this is the so you can if this will contract this, so it will come out with mu यहाँ. Okay. So इसी बात मैंने कहा हमारे पास time component ही only when it goes lowers तो वहाँ minus आएगा. Space component में covariant या contravariant derivative में, ठीक है, तो साइन फ्लिप हो जाता है. सो ऊपर से नीचे से साइन माइनस हो जाता है, माइनस से नीचे हाँ हो जाता है. दैट्स इट. सो दोज आर द रूल्स ऑफ टेंसर अलजेब्रा. अब हमारे पास जो टेंसर है और लैम्डा जो हम नॉर्मली कहते हैं, लैम्डा एज अ क्वांटिटी. रिमेंबर हम पिछली बार स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम, तो लैम्डा वाज मोर और लेस रिप्रेजेंटेड. हमने mu एज अ क्वांटिटी है, यहाँ लैम्डा एज अ क्वांटिटी है. सो हाउ कैन रिलेट दिस कंपोनेंट विद this component by this matrix multiplication? And this matrix multiplication in terms of gamma and beta was like this for a 4 vector.
इनका उसको मैट्रिक भी कहते हैं. It is more or less like this: 0 0 1 0 0 0 0 1, where गामा जो है ये b by c है. ठीक है, गामा इज बीटा इज b by c. जो गामा है ये हमारा लोएस्ट वेक्टर. ठीक है, तो दिस वी हैव. अब इसी में ये हमारा ये है कि वी आर नॉट जो टेंसर रिप्रेजेंट इट्स टेंसर ऑफ नॉट रैंक 1. ये रैंक 1 अगर न्यू हो गया रैंक 2 3 4 5 6, वो क्या है टेंसर ऑफ रैंक n. तो जो suitably रिप्रेजेंटेशन जो आती है टर्न्स आउट दैट टेंसर ऑफ रैंक एंटी-सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2. तो पहले सिमेट्रिक पहले रूल से टेंसर ऑफ रैंक 2 फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट रिप्रेजेंट इट बाय a but by 2, so t mu जो होगा that will be represented as mu sigma. शाबाश लग है ये आपको एक बार मैट्रिसेस से सिग्मा सिग्मा कंट्रैक्ट हो जाएगी ना. एक सॉर्ट ऑफ मैट्रिसेस n क्रॉस n क्रॉस l. तो क्या है m क्रॉस l. The row column है. So you sort of you can see it. If you multiply this with this, so sigma will contract with common indices हो जाएगा. तो पहले में आएगा t mu sigma. Again फिर पहले में आएगा t mu lambda. तो sigma sigma contract हो जाएगा ऐसे. lambda. तो अगर इसको इसके साथ contract करेंगे तो यहाँ mu and lambda रहेगा. फिर अगेन इफ यू कॉन्ट्रैक्ट न्यू लैम्डा लैम्डा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इट विल बी टी म्यू. तो पिछली बार हम क्या कर रहे थे बेसिकली हाउ टी म्यू ए म्यू प्राइम इज रिलेटेड ए म्यू. हाउ दिस 2 पॉइंट्स इन स्पेस कोई इवेंट रजिस्टर कर रहा है. ठीक है, a point in A free, how it is related with point in A prime free via some transformation matrix जिसको Lorentz matrix भी कहते हैं. Such that two reference space में how they will register an event. टाइम कैसे रजिस्टर करते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स कैसे करते हैं. तो स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू बीटा टाइम्स x माइनस bt. इसका t इज इक्वल टू सो टाइम की हाउ कैन रिलेट टू रेफरेंस फ्रेम t इन टर्म्स ऑफ t प्राइम एंड x इन टर्म्स ऑफ x माइनस bt. वो लोरेंट्ज फैक्टर का करेक्शन आ रहा था. तो अब यही है बेसिकली such that we can relate 2 points in space. ठीक है, तो वो हो गया टेंसर ऑफ रैंक 1. अब हमारे पास अगर 2 कंपोनेंट हैं टेंसर्स की, 2 कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे पास ई फील्ड भी है बी फील्ड भी, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंज, इसकी कंपोनेंट्स चेंज हो गई. सो दैट्स व्हाई वी यूज द टेंसर ऑफ कंपोनेंट 2. अगर 3 कंपोनेंट्स चेंज हो गई कोई और तो विल टेक 3 कंपोनेंट्स. सो दैट्स व्हाई टेंसर ऑफ रैंक 2 इज suitable for us, which will relate quantities, this quantity with this quantity via these 2 matrix multiplications. Can also call as sort of indices. ठीक है, this one. And क्योंकि यहाँ पर 4 क्वांटिटीज हैं तो क्या आएगा t0 0 0 1 विच स्पेस टाइम है 0 1 0 2 0 3. पहला आएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3. ऐसे आएगा t0 0 0 1 0 2 0 स्पेस टाइम में 4 डायमेंशन है, मिनिमम ऑफ स्पेस है. 3 स्पेस डायमेंशन है, एक टाइम डायमेंशन. एट एवरी पॉइंट वी नीड अ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट. हां, तो वी हैव 0 0 टाइम इक्वल आएगा 1 0 1 1 1 2 1 1 3. इसी तरह 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3. That's why we'll have 4 cross 3 4 components. 4 cross 16 components are this. So electromagnetic field
if we assume that it's a tensor quantity and tensor quantity has two indices, those two indices will represent the components of those two E fields and E fields. So net number of quantities जो 16 components of 16 components हैं, ठीक है? Now so this is the simple representation. And इसमें भी आप दो चीजें हैं. If you know if something called symmetry, अगर दो indices हैं, T mu is equal to T mu means if you change 0 1 with 1 0, it will not change any difference. अगर नहीं तो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? Symmetric. Yes sir, symmetry. Then it's symmetric. Q mu is equal to T. mu. This is equal to this. But if it's not symmetric, for example, if there's a flip sign, if T mu is equal to minus T mu, तो थोड़ा सा फर्क आएगा. Then that's known as antisymmetric tensor. So antisymmetric tensor में आप देखो एक चीज आएगी. Antisymmetric tensor में आप देखो जो diagonal components है ना, for example T00 will be equal to minus T00. ये क्या है? Twice T00 क्या है? 0. T00 क्या है? 0. So in case of antisymmetric tensor जो diagonal components हैं T01, T22, T23, they will be 0. For antisymmetric tensor. And जो ये वाली quantities होगी जो opposite then T10 is equal to minus T10, T20 is equal to minus T2. ठीक है? If you define antisymmetric tensor, एक हो गया symmetric tensor of rank 2, then it was okay. If we have antisymmetric tensor of rank 2, तो जो diagonal components हैं they will be nullified, 0 आएंगे और जो components हैं इसमें साइन फ्लिप हो जाएगा. T01 is equal to minus of T10, T20 is equal to minus of T02, T30 is equal to minus T of 03. ऐसा होगा. अब हमारा मसला है, हम कहते हैं कि जो एंटीसिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 4 जो ये 2 है, दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट मैथमेटिकली एट लीस्ट. ठीक है, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे. व्हाट वी पॉइंट so that's it. So Phil, then if we assume it this way, then assume it like this. So T mu will be equal to 0. T01, T02, T03. So हम अगर लिखेंगे एंटिटीज सिमेट्रिक टेंसर, ये क्या है शाबाश? It will come out to 0. इसका अपोजिट 0 1. नहीं ये 0 1 है ना, ये आएगा 1 0 1 0 1 0. पर 1 0 ये एंटीसिमेट्रिक है ना, ये क्या आएगा? माइनस T1. ठीक है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंजेड. नहीं एंटीसिमेट्रिक टेंसर में डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. आई शो इसको तो ये 0 आएगा. ठीक है, इसी तरह ये T1 2 है, ये T1 0 1 1 1 0 1 2 1. देखो यहाँ ये आएगा इसका 0 2, इसका आएगा माइनस 2 0. ऐसा ये 3 0 है, इसका आएगा माइनस 3 0. ये पहले T21 आएगा, T22, T23 ये आएगा T30 माइनस T31, T32, T3. So these T22 and T3 is 0. Okay, T1, T2. So this will be equal to minus T20 is equal to T30 is equal to A, it will be minus. 31 is equal to minus. है ना इसका ऑपोजिट? Quant T23 and T3 is equal to. Okay, so this is the way we define antisymmetric tensor of rank 2, 8, 2 and 16 components. And 4 जो डायगोनल अगर इसके 16 components हैं तो 16 minus 4 तो आपको क्या है? 4 और 12. और 12 में भी हम आपको चाहिए 6
6 ही चाहिए क्योंकि इट्स बेसिकली व्हाट the rest of the 6 are only symmetric. उसका sign से change है. ऐसा So you have only 6 parameters, 6 equations to generate वो field. तो इसी चीज़ को अगर हम if you want to represent it for example P01, so हम कहेंगे there are 6 distinct components. है 12 और अब क्योंकि हमने कहा माइनस साइन है कैन जस्ट माइनस साइन का चेंज तो टी म्यू इज गोइंग टू म्यू माइनस इट सो वी हैव 6 डिस्टिंक्ट अगर मैं स्टार्ट करेंगे वी स्टार्ट विद P01 सो नाउ यू हैव टू रिलेट जिस तरह आप कहते हैं टाइम कंपोनेंट को स्पेस कंपोनेंट को दिस कंपोनेंट व्हाई आर दिस लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ऐसा तो एटीट्यूड पर टाइम रजिस्टर कर रहे हैं या स्पेस दो स्पेस पॉइंट्स को रिलेट कर रहे हैं या 2 टाइम्स को आप रिलेट कर रहे हैं ठीक है एटीट्यूड सो दिस इज द वे सो फॉर एग्जांपल P01 को ऐसे लैम्डा 0 लैम्डा 1 सिग्मा P लैम्डा सिग्मा ऐसा देखो सिग्मा सिग्मा में कॉन्ट्रैक्ट T लैम्डा 1 आएगा फिर लैम्डा लैम्डा में कॉन्ट्रैक्ट T 10 आएगा T01 is related to T01 by these two symmetric matrices ठीक है अब देखो अब इसमें ये है मसला फॉर एग्जांपल लैम्डा क्या है लैम्डा 0 लैम्डा इज 0 unless lambda is equal to 0 or 1 and lambda 1 sigma is equal to 0 unless sigma is equal to 0 or 1 0 and lambda is unless for lambda is equal to 0 for 0 0 lambda 0 0 ठीक है सेम 1 1 मैट्रिक्स आएगा ये ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स है ना अगर इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे सो इट विल टर्न आउट टू बी 0 ठीक है फॉर द सेम फॉर एग्जांपल इट्स लैम्डा 0 0 lambda 1 1 it will not be for 0 1 these two quantities it will not be 0 other quantities में it will just it will not contribute ठीक है so lambda means this transformation this in terms of for example अगर ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है only for these components for lambda 0 and 1 and for this so अगर हम ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल T01 किसके बराबर आएगा T01 फॉर एग्जांपल अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन will only take lambda 0 and 1 so it will be for example 3 की जाएगी lambda पहले में lambda 0 0 lambda 1 0 पहली बार P00 plus we'll take all the combinations of zeros and ones in terms of P lambda sigma. So ये इसमें चार have 4 components lambda 0 0 ये lambda 1 0 है अब lambda 1 1 है P0 plus lambda 0 1 अब ये 0 0 था अब 0 1 lambda 1 0 अपना T1 0 plus lambda 0 1 अपना lambda 1 1 T1 वो 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 so these are the all the possibilities we can make अब हम इसको काम करेंगे काम if you remember T00 हमारा है T00 इसको T1 है ना यहाँ पर for antisymmetric tensor T00 यहाँ पर T00 T11 T22 T3 इसको 0 है ना yes sir so if it's 0 and T01 is going to for example is going to minus T1 0 ये चीजें करके हम will go back to our जो हम रिमेंबर हमारी इक्वेशन थी वहाँ पर
when we study structure of space time, तो हमारे पास जो x नॉट है, x नॉट बेसिकली was time, x बेसिकली था x goes to 0 1 2 3, x 0 था time, so basically time को time के साथ two reference point के साथ कैसे रिलेट करेंगे? It's gamma times x 0 minus beta x 1, ये एक था, and दूसरी इक्वेशन x 1 जिसको हमने gamma times x 1 minus beta x 0. These were two transformation equations. अब जो ये हमारे पास ये आ गया है, so how we are going to relate them with these two equations जो हमारे पास आ गई थी पहले, Lorentz equations जो हमने ये algebra किया in terms of matrices. For example, so what we are going to do in the simplest case, for example, in the simplest case, for example, T01 is equal to lambda 00 lambda 11 minus lambda 01. ये वाली दो इक्वेशन है, लैम्डा 11 भी 0 आएगा, लैम्डा ये इसमें T00 भी 0 आएगा, T11 भी 0 आएगा. यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, ये दिस वन है, दिस, ठीक है. एंड वी नो दैट और इसमें भी ये है कि T01 is equal to minus T10, T01 is equal to minus T10. We will see it like that. You can further write it like lambda 1 0. So it's how we can represent this T01 in terms of T01 by this transformation, which we have simplified in these things. ये तो एक हो गया, और ये बोले स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए गामा के लिए, ये x है ना, टाइम बीटा x है टाइम, और अगर हम इसमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो इट विल बी गामा 2 माइनस गामा बीटा 2 T01. Now it's an exercise which as a homework problem should do it. Okay. So how we are going to relate T01 with T10, T02 is gamma times T02 minus beta T12, is the T03 is the gamma times T03 plus beta T. So this is a sort of exercise which you should place. How we can have these two equations in terms of different values of 0, 0, 0, 1. कैसे इसको अब हमारा मेन मसला जो आ रहा था, अब we are coming to the end of it. How we can represent this T00 T00 T21 T11 T22, इसको हम in terms of components कैसे represent करेंगे, ठीक है? If you construct a field tensor, so field tensor को डायरेक्ट कैसे करेंगे कंपैरिजन? F01 is equal to EX by C. F02 तो हम इस सब चीज को हम राइट इन टर्म्स ऑफ, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, इसको हम F mu से डिनोट करते हैं. So wherever you see in the books something write it as F mu, वहाँ पर होता है normally F mu, ठीक है? So now you don't write it in terms of E fields and B fields. Wherever you find F mu is antisymmetrical tensor of rank 2 mu.
और कंपोनेंट्स इसके 16 हैं, so that represents A and B fields. So we will represent F mu. अब इसके quantities हैं ये different T00 T10, तो ये they will represent E fields and B fields, E fields and B fields. For example, F01 is equal to EX by C, F02 हो गया EY by C, ये EX by C, EY by C, F03 हो गया EZ by C. Once ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स हैं, अब हम this and this. इसी तरह ये भी 3 कंपोनेंट्स हैं, बट यहाँ से माइनस का साइन है. ये 3 कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की. इसी तरह F12 ये है ना, ये इट विल बी BZ. F31 it will be also BY, and F23 it will be BX. So if you have this representation, so if you just substitute it here in terms of different components, so F mu जो हमारा आएगा can also represent it as AX by C, EY by C, EZ by C. तो ये है ना इसका EX by C, इसका माइनस आएगा EX by C, एंटीसिमेट्रिक टेंसर EY by C, EZ by C, 0 0 EY by C इसका आएगा, हाँ अब यहाँ पर BZ आएगा, इसका आएगा माइनस BZ, इसका आएगा प्लस BY, इसका BY BX, sorry, yeah, so you can see this combines, this combines, this combines plus, this, and this. Okay. So this is electromagnetic field tensor. This thus relatively completely permits the job begun by Oersted combining E fields and magnetic fields into a single entity called F. तो अब हम मैथमेटिकली वी हैव रीच्ड अ स्टेज वी आर एक तो एक्सपेरिमेंटली आप डिफाइन करते हैं लैब में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और सेम फिनोमेना जो ओयरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था. अब ये मैथमेटिकली ऑल्सो जो कंपोनेंट्स ऑफ ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स को कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं इन सिमेट्रिकल वे इन एंटीसिमेट्रिक वे we represent it in a single equation. So these are the first steps of unification. हम कहते हैं nature of unification equation. And there should be some mathematical way of representation. There should be some mathematical one equation. So उसकी एक small ये है example. ये है कि we are able to represent E fields and B fields in terms of one mathematical equation. जिसको हम F mu के साथ भी denote कर सकते हैं. अब इसी का ड्यूअल टेंसर है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट्स दैट ई फील्ड्स एक में होंगी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने पिछले वाले क्लास में फिर रिमेंबर हमने कहा था ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स आर सिमेट्रिक एट ए गिवन पॉइंट. फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स विल ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स. सो यू कैन नॉट नो कि फील्ड एट ए गिवन पॉइंट किससे प्रोड्यूस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है. ठीक है, सोर्स चार्ज क्या है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, दैट्स द सिमेट्री ऑफ दिस थिंग. ठीक है, अब यही है कि अगर हम ई फील्ड्स को बी फील्ड्स के साथ चेंज करेंगे एंड बी फील्ड्स को ई फील्ड्स के साथ चेंज करेंगे, जो ये टेंसर है, ठीक है, उसकी फॉर्म हम उसको हम इन टर्म्स ऑफ सम ड्यूअल टेंसर करेंगे और इन ड्यूअल स्पेस मैथमेटिकल ड्यूअल स्पेस और ड्यूअल टेंसर मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूज करेंगे, उसको हम ड्यूअल टेंसर. So and we can represent it in how E fields and B fields transform in that dual space. So we represent it as G mu. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस इतनी फर्क है ना. यहाँ की फील्ड से पापना माइनस BX माइनस BY माइनस
0 0 diagonal elements. हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर x by c फॉर एग्जांपल E z by c ये आएगा E z by c ये माइनस आएगा ये आएगा E y by c ये आएगा माइनस E y by c ये E x by c आएगा ये भी E x by c आएगा 1 माइनस आएगा और क्या if you want to represent थोड़ा सा E by c goes to B or B goes to minus B. So maybe a sort of symmetry there. And if you see how do these relate with the previous equations, with the previous things जो हमारे equations हैं तो राजित नहीं करेंगे. हाँ please stop. तो हमारी equations हैं Ex equal to Ex. So how we can represent these things? So that's we'll stop at this point. So it only shows the symmetry क्या है. Okay. So but I'll suggest you at least attempt this problem of this book. At least read it. Prove that the symmetry or antisymmetry of tensor is preserved by Lorentz transformation. That's if T mu is symmetric, show that T mu bar is also symmetric. और ये क्या है कि T mu symmetric है? T mu bar is also symmetric, and likewise for antisymmetry. At least attempt or read it. Okay.